Okay, so before I start this video, I would like to mention the fact that my audio recording software really glitched on this one, because of which the audio might dip for like half a second, or jump from left channel to right channel, or just turn from stereo to absolute crappy mono. I have done things to fix it in the editing process, but if you're wearing earphones, I am really sorry. And I can assure you, this doesn't happen 95% of the times. So hey, there's some hope. Anyway, enjoy the video. Hey everyone, earlier this weekend I posted this on my Instagram story asking people for questions, which is, by the way, at Pinata. Just follow me, give me money, donate, PayPal account, whatever it is. I asked people who watch my Instagram stories for some questions. I thought it would make a great Q&A video. Unfortunately, I got questions like this. But I have to be honest, there were some great questions which I'm not going to reveal to you right now. I'm just going to straight up answer them. I'll just read every question before answering. Also, I'm not going to be showing the names of the people who asked these questions except one, and that is because he's already in the YouTube space. I just won't show anyone else's name just because if one of you doesn't end up liking these questions that they have asked, I don't want their accounts to be bombarded with hate or anything like that, if that given this video gets some views and stuff. So I guess let's just start answering some questions. All along, you use your heart as a fortress. So this one says how to be like Andrew Tate. Step 1, breathe air. Step 2, listen to this song 30 times a day and consider this for your funeral ceremony. Step 3, run around in GTA 5 beating the shit out of people who work a 9-to-5 job. Also, while you're there, ask people the color of their guy. Step 4, be absolutely terrified of the fact that a female is piloting your aircraft and try to jump out of it. Nah, I'm just kidding. I love the guy. Second question on the list is PS5 versus PC. Now, these are the interesting kind of questions that I can get into. I'm not going to talk about this in like massive detail, but there are a few benefits with PS5 and PC. The basic approach is when you want to buy a PS5, you want to get an experience that is more plug and play and with very good graphics these days, because PS5 is way better than PS4 when it comes to computing horsepower and everything. There are things that PS5 can do that PS4 couldn't, like ray tracing and stuff. A much more advanced version of it at the very least. This makes the PS5 a closer competitor to what PCs are, but if you are looking to extract every single detail out of every pixel, then PCs are the way to go. Now, there are a few problems with both. Let's just quickly discuss that. PS5 obviously doesn't have the upper hand when it comes to graphics and when it comes to performance. So if you are into competitive gaming and stuff where you need those high FPS gaming and stuff, just go with a PC. You'll get way better FPS and you have a lot more options. Like, the modularity is so good with PCs that you can build pretty much anything in any price bracket, which doesn't happen with consoles. A problem with PCs is the fact that there might be a lot more bugs that compared to a PS5 game, excluding Cyberpunk, because that game has had bugs across the board with every console and every platform. Building PCs is a double-edged sword in my opinion, because while there are a lot of options and there is modularity and there are a lot of things that you can do with it, the number of choices that you get with PCs creates a situation where there are a lot of processors, lot of GPUs, and then a lot of combinations of those GPUs and processors. So I might be having an AMD GPU with an NVIDIA graphics card, and then I might be having an Intel CPU with an AMD graphics card. So ultimately it becomes really difficult for the game developers to optimize their games for every single combination of CPU and GPU and every single version of CPUs and GPUs, whereas consoles are much more standardized. If you are buying a console in the US, it would be the same as a console being bought in some other country. You do get the benefit that comes from the standardization of the entire platform, which makes it way easier for game developers to develop games for the platform. And PS5 in general is a lot more powerful than its predecessor, so obviously you would get a lot more performance out of it. कभी लगता है कि quality videos are getting less reach than short common reels,
So I would just like to mention the person who has sent me this question. His YouTube channel is Style Entertainer. I just put everything here. Probably his channel, his Insta and everything. Go follow them. Go watch his channel. If you watch like Hindi content, he is an amazing like travel vlogger kind of guy. I have watched a lot of his reels, videos and everything. He works a lot on like finding the right music for the video and everything. So yes, I do think reels and TikTok को बहुत ज़्यादा views मिल रहे हैं, and we just have to understand the way it works, so it gets really easy for people who don't know that. So if I have a YouTube video जो 10 मिनट की है, और whereas एक और कोई मेरा competitor है जो reels निकाल रहा है जिसकी एक वीडियो 15 seconds की है. अब मेरी वीडियो क्योंकि 10 मिनट की थी, तो मेरी वीडियो आप एक देख पाओगे 10 मिनट के अंदर, वेराज अगर उसकी 15 सेकंड की रील है तो आप 1 मिनट के अंदर 4 रील्स देख लोगे उसकी, एंड 10 मिनट के अंदर कॉन्सिक्वेंटली आप 40 रील्स देख लोगे उसकी. क्योंकि रील्स इतनी छोटी हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियो का कॉन्सेप्ट यही है कि छोटा रखना है, बिकॉज पीपल वो इसी प्रिंसिपल पे चलता है कि people don't really have a lot of time to like watch long videos. So this gives my competitor an opportunity कि वो अपना ज़्यादा कंटेंट दिखा पाएगा, ज़्यादा वीडियोस दिखा पाएगा कम टाइम के अंदर, whereas मेरी एक 10 मिनट की वीडियो ही लोग देख पाएंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी चीज़ का रिवॉर्ड देते हैं आपको कि आप कितने एक्टिव हो और कितना फ्लो है आपके चैनल पे, आपके इंस्टा पेज पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं एक दिन में, कितनी वीडियोज़ आप डाल रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह. तो क्योंकि मेरे कंपेटिटर ने ज़्यादा रील्स दिखा दी उतने ही टाइम में जितने टाइम में मैं सिर्फ एक वीडियो दिखा पाया, ऑब्वियसली उसके व्यूज़ कहीं ज़्यादा होंगे, लाइक इंडिविजुअल व्यूज़ उसके मुझसे ज़्यादा ही होंगे. प्लस जैसी रील्स काम करती हैं वर्सेस यूट्यूब वीडियोस काम करती है, यूट्यूब वीडियो पे रिटेंशन बहुत मैटर करता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. वेराज जो ये रील्स होती हैं लिटरली आपकी स्क्रीन पे अगर 2 सेकंड भी फ्लैश कर जाए वो एक व्यू में काउंट हो जाता है कि वो एक हो जाएगा कि प्ले कर लिया. यूट्यूब और इंस्टा की अप्रोच बहुत अलग है, एंड एक पॉइंट पे मुझे लगता है ये क्वालिटी वगैरह भी सब कुछ अंडरमाइन हो जाती है. बिकॉज अब जैसे मैं अपना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए. आई हैव ओनली 93 सब्सक्राइबर्स, तो मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, 200 300 वगैरह वगैरह. सो देयर वाज दिस वन वीडियो दैट आई जस्ट पुट अ थंबनेल हियर. इस वीडियो को आई थॉट दिस वाज लाइक क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी आई हैव एवर अचीव्ड इन अ वीडियो, एंड काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के बनाई थी. ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो एज अ क्रिएटर कि आपको इसका आउटपुट मिलना चाहिए, यू थिंक यू डिज़र्व सम काइंड ऑफ आउटपुट फ्रॉम दिस, बट यूट्यूब इज़ नॉट लाइक दैट, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं कि आप विश करोगे और आपको मिल जाएगा. आई न्यू कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, आई न्यू मैं जो हैशटैग्स वगैरह लगाऊंगा ज़रूरी नहीं मेरे टैग्स चल जाएं, आई नो कि मैं जिन लोगों को सर्कुलेट कर रहा हूँ वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आगे शेयर ना करें उस वीडियो को, तो ये वीडियो धीरे धीरे अपने व्यूज़ लूज़ करेगा, और इसने कर दिए. तो अभी इट इज़ सिटिंग समवेयर अराउंड 330 340 के आसपास होंगे इसके व्यूज़. लाइक दैट वीडियो इज़ क्वालिटी कंटेंट इन माई ओपिनियन. दैट वीडियो शुड हैव रिसीव्ड मोर व्यूज़, बट दिस इज़ नॉट हाउ यूट्यूब रियली वर्क्स. इवन दो वो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट क्योंकि वो रील्स का पार्ट नहीं था और वो शॉर्ट्स का पार्ट नहीं था, जो ये प्लेटफॉर्म्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ईजी बनाने के लिए कि आप कितनी आसानी से देख सको. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, अगर आप यूट्यूब का लिंक किसी को शेयर करते हो डीएम के अंदर, उसको एक गंदा सा लिंक बन के जाएगा, एक थंबनेल बन के चले जाता है, और फिर उसको क्लिक करना पड़ता है. वो और भी गंदे इंस्टाग्राम के ब्राउजर में खुलता है जो साला लैंडस्केप भी नहीं जा सकता, वो सिर्फ पोर्ट्रेट में रहता है. आपको वहाँ से देखना पड़ेगा उसको गंदे से उसमें. अगर आपको प्रॉपरली देखना है तो आपको वो वीडियो का लिंक कॉपी करके अपनी यूट्यूब की ऐप के सर्च बार में डालना पड़ेगा. बहुत सारे ड्रामे करने पड़ेंगे जस्ट टू वॉच दैट यूट्यूब वीडियो द वे इट इज़ मेंट टू बी वॉच्ड. वेराज अगर आपने इंस्टाग्राम की रील देखी हो या इवन यूट्यूब की शॉर्ट देखी हो, और आप किसी पेज की पोस्ट देख रहे हो, आपने उसकी पोस्ट की रील पे क्लिक किया, वो रील्स का एक अलग से सेक्शन खोल देता है और उसके बाद इट्स लाइक एंडलेस स्वाइपिंग. वेराज जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हो आप उसके थंबनेल से जज करते हो, आप उसके टाइटल से जज करते हो, आपको टॉपिक वगैरह पता चलना चाहिए तभी आप क्लिक करोगे उस पर. तो यूट्यूब पे कंपेटिटिवनेस यहाँ से जनरेट होती है कि यू हैव टू अपील टू द कस्टमर इवन बिफोर दे हैव कम टू योर वीडियो. वेराज रील तो प्ले ही होनी शुरू हो जाती है सामने, और उसके ऊपर अगर कोई कैप्शन लिखा हो उससे आपको समझ में आ जाए तो आ जाए, बहुत बारी वो भी नहीं लिखा होता है, और जब तक आप रियलाइज करोगे उस रील में क्या है वो प्ले होके खत्म हो चुकी होती है बहुत बारी. सो दिस इज द वे रील्स गेट व्यूज बहुत ज्यादा मिलता है, आई डू अग्री, बट क्वालिटी कंटेंट को इसलिए नहीं मिल पा रहे बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई जस्ट मेंशन्ड, not because कि quality content में कोई problem है. Okay, I should probably stop the video right here because I realize that answering all of your questions might make this video a little longer and make it a little more uncomfortable for the audience to watch. But you can wipe those tears off your cheeks because the next part would be uploaded very, very shortly on my channel. So stay tuned if you want to see me do dumb stuff in front of a camera and answer banger questions like how to make a perfectly gold roti. How do you deal with setbacks when your content doesn't get the needed appreciation? Do you think it is a good idea to leave your home country to settle abroad? So thanks for watching the part 1 of this video, and I'll see you in the part 2 of this video a day or two later. Until then, stop bothering me.